اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ How are you all? Hope so you all will be in best state of health and iman. I am from City English School System, Girja Road, Rawalpindi. Today the date is 11 September 2021. I am here to teach you English. Today we will discuss about our remaining part. Lecture number 2 is unit number 8, The Wise Villager, page 85, 86 and 87. Okay, before starting our reading, there are some SLOs. You will be able to know about pen knife and also will be know about wisdom of villagers. Difficult words are scratch, khujana, surprised, हैरान हुआ, indeed, در حقیقت, laughed, ہنسا, set off, روانہ ہوا, stupid, احمق, pen knife, چاقو, جیبی چاقو, sweet, پسینہ, crowd, ہجوم, astonished, حیران ہوا, ridiculous, احمقانہ, spread, پھیلنا, nearby, قریب, lunatics, پاگل, roared, گرجا, wildfire, جنگل کیا, گناؤں سے لان کیا, undisturbed, امن و امان. So there are some common words which we use in our daily routine. They are that, the, yes, do, doing, tree, from, asked, one, said, with, back, his, out, word, when, and, away, change, each. So dear student, let's start our remaining reading. And the man from the town was very surprised indeed. جو قصبے سے آدمی آیا ہوا تھا وہ واقعی حیران ہو گیا. He scratched his chin. اس نے اپنی تھوڑی کو جھنجھوڑا. And said to himself, اور خود سے کہا, These people are all mad. یہ تمام جو لوگ ہیں یہ پاگل ہیں. When he got back to the town and told all his friends about what he had seen in the village, جب وہ واپس اپنے قصبے گیا اور اس نے تمام لوگوں کو ان گاؤں والوں کے بارے میں بتایا کہ وہاں کیا ہوا, they laughed and laughed. وہ بہت زیادہ ہنسے. One or two of the man's friends just could not believe that people could be so stupid. اس کے دوستوں میں سے کچھ نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایسے لوگ احمق لوگ بھی ہو سکتے ہیں. So the next day, لہٰذا اگلے دن, two of them set off to the village to see for themselves. ان میں سے دو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے گاؤں روانہ ہوئے. When they arrived at village, جب وہ گاؤں پہنچے, they found a huge crowd of the people standing round a tall tree. تو انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ ایک لمبے سے درخت کے پاس کھڑے ہیں. The trunk of the trees was nearly 2 meters wide. اس کی درخت کے جو تنے تھے وہ تقریباً 20 میٹر چوڑے تھے. Two men were busily working on the trunk. دو آدمی مصروف تھے اس کی تنے کاٹنے کے. Each had a small pen knife in his hand and was cutting the wood. ان میں سے دونوں کے ہاتھ میں ایک جیبی چاقو تھا جس سے وہ اس کے لکڑی کو کاٹ رہے تھے. They were working so hard. وہ بہت محنت سے کام کر رہے تھے. That the sweat was pouring off their forehead. کہ پسینہ ان کے ماتھے سے بہہ رہا تھا. What are they doing? یہ کیا کر رہے ہیں? Asked one of the men from the town. ایک آدمی نے ان میں سے پوچھا جو کہ ٹاؤن سے آیا ہوا تھا, یہ کیا کر رہے ہیں؟ Why they are cutting down the tree. یہ درخت کاٹ رہے ہیں. Replied one of the villagers. ان میں سے ایک گاؤں والے نے کہا, Can't you see? کیا تم نہیں دیکھ سکتے؟ With pen knives. چاقو کے ساتھ. Asked the townsman. قصبے سے آنے والے بندے نے پوچھا. Yes, said a villager in the crowd. Crowd میں سے بندے نے کہا, جی ہاں. We always cut trees down with pen knives. ہم ہمیشہ چاقو کے ساتھ ہی درخت کاٹتے ہیں. But it will take a year or two. لیکن اس میں 1 یا 2 سال لگ سکتے ہیں. Said the townsman. قصبے سے آنے والے آدمی نے پوچھا. Yes, جی ہاں. Replied the villager. گاؤں والے نے جواب دیا. It's slow. یہ آہستہ ہے. But it is a good method. لیکن یہ ایک اچھا طریقہ ہے. It always works. یہ ہمیشہ کام آتا ہے. The men from the town were quite astonished. قصبے سے آنے والا جو بندہ تھا وہ بہت زیادہ حیران ہوا. They went back to the town. وہ ٹاؤن واپس گیا. The stories about the villagers
The stories about the villagers and their odd behavior spread like wildfire. गाँव वालों की कहानियाँ और उनका जो रवैया था वो जंगल की आग की तरह फैल गया. Those people are quite mad. वो लोग बिल्कुल पागल हैं. The town folk said. कस्बे वालों ने कहा. The news even reached the district officer. यहाँ तक कि ज़िलाई अफसर तक भी ये खबर पहुँच गई. What's all this about? ये सब क्या है? He asked. उसने पूछा. And the villagers really mad? क्या सचमुच गाँव वाले पागल हैं? Yes, indeed they are. जी हाँ, हकीकत में वो पागल हैं. Replied his chief clerk. उसके चीफ क्लर्क ने कहा. They take water out of the river with a cup. वो दरिया से पानी कप के ज़रिए निकालते हैं. And they cut down trees with pen knives. और वो चाकू के ज़रिए दरख्त काटते हैं. They are quite crazy. वो बिल्कुल पागल हैं. Are they dangerous? क्या वो ख़तरनाक हैं? Asked the district officer nervously. उसने डिस्ट्रिक्ट ज़िली ऑफिसर ने घबराहट के आलम में पूछा. I don't know. मुझे नहीं पता. Replied the clerk. क्लर्क ने जवाब दिया. The following day, the district officer and a few of other important people of the town went to the village to find out more. अगले दिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और उसके कुछ इम्पोर्टेंट बंदे बाकी मालूमात हासिल करने के लिए गांव गए. When they got there, they saw a long line of women. जब वो वहाँ गए तो उन्होंने औरतों की एक लंबी कतार देखी. Walking to and from a large ant hill. वो आगे की तरफ एक चुंडियों की चट्टान की तरफ जा रहे थे. Each woman was carrying a basket. हर औरत ने एक टोकरी उठाई हुई थी. The first woman in the line stepped up. पहली लाइन में से पहली औरत आगे की तरफ बढ़ी. To the ant hill. चुंटियों की चट्टान की तरफ. And took an ant from the moist earth. गीली ज़मीन से उसने एक चुंटी उठाई. She put the ant into her basket. उसने एक चुंटी अपनी बास्केट में डाली. And carried it away. और आगे की तरफ चल पड़ी. What are they doing? ये क्या कर रही हैं? Asked the astonished district officer. डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो ज़िलाई ऑफिसर ने हैरान होकर कहा. They are carrying away ants. ये चुंटियाँ लेकर जा रही हैं. Replied a man standing nearby. करीब खड़े आदमी ने कहा. Why? क्यों? Asked the district officer. ज़िलाई ऑफिसर ने कहा. Because ants are very dangerous. क्योंकि चुंटियाँ बहुत ख़तरनाक होती हैं. Said the man. आदमी ने कहा. They eat everything. वो सब कुछ खा जाती हैं. We must carry them away. हमें इन्हें यहाँ से हटाना है. But one in each basket. लेकिन एक बास्केट में एक. Cried the district officer. ज़िलाई ऑफिसर चिल्लाया. That's ridiculous. ये हैरान कुन बात है. We always do it that way. हम हमेशा इसी तरह करते हैं. Replied the man. आदमी ने जवाब दिया. It's slow. ये सुस्त रफ्तार है. But it's good method. लेकिन ये एक अच्छा तरीका है. It always works. ये हमेशा काम आता है. When the district officer returned to the town. जब ज़िलाई ऑफिसर टाउन वापस आया. He called a meeting. उसने एक इजलास बुलवाया. I have been to the village. He announced. मैं विलेज गांव गया था. उसने ऐलान किया. The people there are quite mad. वहाँ के लोग बिल्कुल पागल हैं. They take water out of the river with a cup. वो दरिया से कप के ज़रिए पानी निकालते हैं. They cut down the trees with pen knives. वो चाकू के ज़रिए दरख्त काटते हैं. They carry ants away one by one. और वो चुंटियों को एक एक करके लेकर जाते हैं. They are lunatics. वो पागल हैं. Don't go near them. उनके करीब मत जाना. But sir, said one of the secretaries. उनमें से एक सेक्रेटरी ने कहा. लेकिन सर, our new road is going to go right past that village. लेकिन हमारा नई सड़क जो है वो उनके गांव के करीब से ही जाती है. Then change the plan, roared the district officer. फिर अपना इरादा बदल दो. ज़िलाई ऑफिसर गरजा. We can build the road along the top of the hill. हम चोटी के ऊपर से रोड को गुजारेंगे. It must not be constructed near that village. हम उस रोड के बिल्कुल करीब रोड को तामीर नहीं करेंगे. So the road was built along the top of the hill. लिहाजा ये सड़क पहाड़ी की चोटी पर बनाई गई. And did not go anywhere near the village. और गांव वालों के करीब नहीं गई. The people of the village plucked their fields. गांव के जो लोग थे उन्होंने अपने खेत सैराब किए. And went back to their
undisturbed way of life اور وہ اپنی امن و امان والی زندگی کی طرف بڑھ گئے. They were not mad at all, they were very wise. وہ پاگل نہیں تھے، وہ عقل مند تھے. Now dear student, we have completed our reading. So inshallah we will do a exercise in our next lecture. So at the end there is diary, reading page 85, 86 and 87, and underline verb, adjective and conjunction. So verb is action word, doing words. For example, eating, cooking, studying, playing, crying, drinking and sleeping. So the next is conjunction, and conjunction is joining words, two phrases, two words, clause together, and there are some conjunctions which mentioned in your lecture. And the next one is adjective, and there are some adjective. At the end, tradition of says, press your parents' feet before going to bed. At the end, Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay dear students, Allah Hafiz, take care, bye.